Good morning, dear students. On page number 99, exercise 5.1 of chapter AP. First question: in which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression AP and Y? इसमें हमको सॉल्व करके बताना है कि किस में AP बन रही है और किस में नहीं बन रही है. Then the first is the taxi fare after each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional किलोमीटर. हमको एक सिटी में टैक्सी चलती है जो फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज ₹15 लेती है एंड देन उसका जो चार्जेस है वो ₹8 पर किलोमीटर है. नाउ सॉल्यूशन, लुक एट द सॉल्यूशन. टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज ₹15. देन टैक्सी फेयर फॉर 2 किलोमीटर इज 15 + 8 इज ₹23. And the next is taxi fare for first 3 kilometer is 23 + 8 31. Clearly 15, 23, 31 forms an AP because every term is 8 more than the preceding term. Preceding term like 23, the preceding term of 23 is 15 and 15 is less than 8 of 23, and if the 23 is preceding term of 31 and 23 is less than 31 to 8, 23 31 से 8 छोटा है, तो ये क्लियरली हमको दिख रहा है एक AP बन रही है, तो हम क्या कह सकते हैं, यस इट इज़ एन AP. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 रीड इन योर टेक्स्ट बुक. द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 is deposited at the compound interest at 8% per annum. We know that if ₹P is deposited at R% compound interest per annum for n years, over money will be principal P is bracket 1 plus R upon 100 to the power n. Then after n years, this is the formula you have studied in chapter standard 7th 8th. Therefore after every year our money will be first year 10,000 bracket 1 plus 8 upon 100 to the power 1, because here is first year then 1, number of years is 1, comma the second year 10,000 bracket 1 plus 8 upon 100 टू दी पावर 2, क्योंकि यहाँ पर 2 ईयर्स है तो पावर 2 आएगी, नंबर ऑफ ईयर्स 2. और लास्ट थर्ड ईयर में 3 साल के लिए 10,000 ब्रैकेट 1 + 8 upon 100 टू दी पावर 3. कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहेगा और आगे नेक्स्ट पे 4, 5, 6 पावर आती जाएगी. यानी क्लियरली एडजेसेंट टर्म ऑफ दिस सीरीज डू नॉट हैव द सेम डिफरेंस बिटवीन दैम, देयरफॉर दिस इज नॉट एन एपी. जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका सॉल्यूशन अलग आएगा, इसका सॉल्यूशन उससे ज़्यादा होगा, उसका सॉल्यूशन उससे भी ज़्यादा होगा. The solution are in ascending order, so we can say that they are not in a sequence difference, then and same difference, then we can say that this is not an AP. Now dear students, read the question number 2 in your textbook. Question number 2, write first 4 terms of the AP when the first term A and the common difference D आर गिवन एज फॉलोज. हमको AP बनानी है जिसमें हमको A दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस D दिया हुआ है. जस्ट देन द फर्स्ट इज A इज इक्वल टू 10 एंड D इज इक्वल टू 10, बोथ आर सेम. देन हियर इज द सॉल्यूशन फॉर यू. A इज इक्वल टू 10 एंड D इज इक्वल टू 10. देन A1 फर्स्ट टर्म इज A इज इक्वल टू 10 एंड A2 द सेकेंड टर्म इज A1 प्लस कॉमन डिफरेंस D. देन A1 वैल्यू ऑफ A1 इज 10 and difference is 10, 10 plus 10 20. Now the third term A3 is equal to A2 plus D, then 20 plus 10 is equal to 30. Now A4 fourth term A4 is equal to A3 plus D. जो भी नेक्स्ट टर्म होगा वो उसके प्रिसेंडिंग टर्म में डिफरेंस प्लस करने से मिल जाएगा हमको. then 30 plus 10 is 40. Now the AP is 10, 20, 30, 40 to be continue. Now the fourth, in the fourth the value of A is -1 and the value of D is 1/2. Then first A1 is A is equal to -1, then A2 is equal to A1 plus D. Now -1 plus half, -1 plus half, the answer is -1/2 with the help of LCM, or directly you know that -1 plus 1/2 is -1/2, minus half. Now the third term A3 is equal to A2 plus common difference D is equal to -1/2, the last term preceding term plus the common difference 1/2 plus 1/2 minus 1/2 means 0. Now the fourth term A4 is equal to A3 plus D.
Here EH3 is 0 and common difference D is 1 by 2. Then 1 by 2. Then our AP is -1, -1 by 2, 0, 1 by 2 to be continuous with the same difference 1 by 2. Now dear students, you have to be done question number 1 with all four parts and question number 2 from first to fifth part in your notebook. Okay, thank you.